जब मैंने एक स्ट्रक्चर्ड कैपेसिटीज में वीडियोस बना के आप सबके साथ शेयर करने का प्लान बनाया था, द आइडिया वाज नेवर फॉर मी टू बिकम लाइक अ फिटनेस और अ वेट लॉस गुरु ऑन स्टेरॉइड्स, जो हर 15 दिन में आपके पास आके बोलेगा कि ऐसे पतले हो जाओ, ऐसे पतली कमर पाओ. आई मीन श्योर दैट कुड बी लाइक अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन आइडियली आई जस्ट वांट टू पुट आउट स्लाइस ऑफ लाइफ, माय एवरीडे स्ट्रगल्स, विक्ट्रीज, म्यूजिंग्स दैट कुड सम वे हेल्प यू and maybe live your life a lot better. And कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं उस ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा डिविएट हो रही थी, because somewhere the algorithm did take a toll on me and I got a little greedy for views. And which is where I thought it will be a good idea for me to take like a step back. वैसे भी दिवाली थी, I'm a big political enthusiast, so I really wanted to follow US elections very closely. And of course, the main reason why this video is even here with this topic is because last 2 months is when I sort of hit rock bottom again. So because last 60 days की मेरी memories and learnings were afresh of hitting rock bottom and coming back a little better, I thought it'll be a good idea for this video to tell you about it. Hi guys, मेरा नाम निशा है और आज हम बात करने वाले हैं रॉक बॉटम के बारे में. रॉक बॉटम एक ऐसी जगह है जहां पे किसी को जाना पसंद नहीं है, लेकिन एक ऐसी जगह है जो अगर आपको लाइफ में कुछ भी सिग्निफिकेंट, डिसरप्टिव और यूनिक करना है, हर रास्ता उसी की तरफ से जाता है. So without wasting any more time, let's go. So by definition, rock bottom यानी एब्सोल्यूट लोएस्ट लेवल. रॉक बॉटम यानी धरती का सबसे नीचे वाला गढ़. रॉक बॉटम प्राइसेस यानी इससे नीचे प्राइसेस कभी जा ही नहीं सकती है. एंड इन लाइक एन इमोशनल एंड मेंटल कैपेसिटी, इससे लोएस्ट आप एज एन इंडिविजुअल कभी फील कर ही नहीं सकते हो. दिस इज अ मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड जिसके अंदर यू आर फियर इंड्यूस्ड, आप हारे हुए होते हैं, यू फील होपलेस, हेल्पलेस, you're not able to think clearly, you're not able to do anything productive, you're constantly anxious, sad, आप खुद को victimize करते रहते हो और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा या पाऊंगी नहीं. लेकिन what makes things a little interesting is like the second definition of rock bottom, which is being the foundation. किसी भी चीज को grow, किसी भी चीज को प्रॉस्पर होने के लिए, किसी भी चीज को जमीन से ऊपर उठने के लिए आपका बेस ऑन द जमीन नीड्स टू बी रियली 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 फर्म. अगर आपको लाइफ में कुछ भी यूनिक, सिग्निफिकेंट और ग्रोथ ओरिएंटेड करना है, तो इट इज प्रैक्टिकली इनवेरिएबल दैट यू विल गो थ्रू दीज रॉक बॉटम्स इन लाइफ, सो दैट वंस यू हिट रॉक बॉटम यू बाउंस बैक harder, stronger, better, higher, etc. I sincerely hope that all of you have not had a chance to visit rock bottom as often as I have. लेकिन अगर मुझे आपको simply इसको explain करना है, तो picture like a fighting match. जो last punch होता है ना, जो आपके मुंह पे आता है and you sort of fall down, wherein you completely give up. When you're on the floor, you know, with the pain, with the hurt, with the feeling of, you know, finally giving up, that basically is rock bottom. So आप actually fight match में you gave your best, but circumstances happened, maybe the opponent was better, you still came back, you still tried your best, you still fought with, or like you still fought with every bit of energy, blood, skill that you had. लेकिन फिर भी, you know, after a point of time, your weakness, your pain gets the better of you, and that is where you kind of stop responding, and that's where the opponent sees like the opportunity to like, and that's when he hits you. So this phase of lying down, feeling hurt, I'm trying not to cry, but yeah, that feeling is rock bottom. Some fun facts about rock bottom. Number 1, rock bottom ऐसा नहीं है कि आप 1 सेकंड में पहुंच गए, 2 सेकंड बिताए और 3 सेकंड में निकल गए. अगर आप इसको कंपेयर करोगे अपनी UFC मैच से, you will be standing in the fighting ring for a bit, you will be fighting long enough to be hit, weakened, and then finally you will fall down. अगर आप इसको अपने पर्सनल लाइफ से भी कंपेयर करोगे, you know, maybe you've lost a family member, the first couple of days you will just be in a state of shock or autopilot mode पे you will be doing things. It's only once you will try getting back to your normal life is when you will realize this person's void.
And that is when, with grief plus shock plus void plus missing plus everything का deathly cocktail, is what is going to take you to rock bottom. Rock bottom में रहना is a very isolated experience. On most occasions people take longer than usual क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है कि हमको आगे करना क्या है. यहाँ पे quite frankly nobody can help you. So you know, some people will probably try giving you like a shoulder to cry on. लेकिन living with the whole lonely loser like experience is exclusively in your head and on yourself. So वहां से निकलना, क्योंकि मोस्टली हमको कुछ पता ही नहीं रहता है कि करना क्या है. In that state of shock we waste a lot of time being there, and then like recovery itself will also be like a mix of trial and errors, जो करते करते धीरे धीरे आप वहां से निकलते हो. So in a world which is so used to getting like things in 8 to 10 minutes, is a long haul thing. So be patient with it. तो अगर आपको लाइफ में कुछ भी सिग्निफिकेंट करना है, नॉर्मल से बेहतर, यूजुअल से बेहतर चीजें करनी है, तो योर चांसेस ऑफ chilling at rock bottom get a lot higher than most people who will live like a safe, mediocre to a large extent life. There is nothing wrong with setting low expectations. At least you are clear about what you want from yourself and your life. लेकिन अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, just take anyone's example, guys. Everyone's gone through like the process of hitting rock bottom and like no amount of professional advice, medicines, medical advice, help, substances, shoulders to cry on, expensive holidays, vacations, beaches, expensive shopping trips, nothing is going to help you. Each one of us, जैसे हम unique है, वैसे ही हमारा recovery mode will be unique depending upon what our past experiences have been, what circumstances have led us to this version of rock bottom, and what we really want to do with ourselves. You can actually treat rock bottom to a very large extent as like your professional work experience. जितना आपका work experience होता है, उतना ही you become like a better candidate as doing work, and maybe then grow in ranks in your company, in your business, etc., etc. So in a similar capacity, the number of times you visit rock bottom is the only way you will be better prepared to handle the rock bottom stage and to figure solutions in like new creative fun hopefully manners. फन फैक्ट, जब मैं ये वीडियोस बनाना स्टार्ट करने वाली थी उस टाइम प्रोबेबली माय फर्स्ट वीडियो हैड टू बी ऑन रॉक बॉटम, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इट माइट नॉट बी लाइक द मोस्ट अपलिफ्टिंग पीस ऑफ कंटेंट टू स्टार्ट आउट विद. सेकेंड, इट वुड हैव फेल्ट लाइक वेरी अटेंशन सीकिंग थिंग दैट सी लाइक माय लाइफ इज सो मिजरेबल एंड शिट. और तीसरा, आई थिंक समहाउ नो द इंटरनेट हैज सॉर्ट ऑफ जस्ट incentivized all of us to overshare, overtell and overshow, just by, you know, like in the hope of becoming famous, and that is something that I've never been okay with. So which is where personal struggles और वो सारी चीजों के बारे में मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, because I'm so fiercely protective about what I have been through. But more importantly, more than the struggles and the rock bottoms that came along, would really want you guys to know that how each of these milestone rock bottoms have made me into like the best version of myself that I could ever be. So maybe, yeah, I think I'll just tell you a little bit about the few things that I have been through and how is it that they have made me better. First is personal loss. So I grew up at my nanny's place in Baroda. मेरे mom dad Bombay में काम करते थे. They could not afford raising me here. So I was sent to my nanny's place since the age of 3. And for me, as an only child, my whole universe was and will always probably be my nanny. She was my parents. She was my sibling, she was my best friend, she was my guardian, she was my neighbor, she was my everything. So at the age of 16, after being so attached to her, I lost her to an illness. And I think until now, that rock bottom of losing my nanny has been like the worst. I just realized कि पर्सनल लॉस के कॉन्सिक्वेंस ऑफ रॉक बॉटम का जो वीडियो पार्ट मैंने बनाया था इन वन झटका आई सॉर्ट ऑफ जस्ट डिलीटेड इट नाउ, इट जस्ट डजंट एग्जिस्ट. एनीवे, सो आफ्टर आई लॉस्ट माय नानी, नेक्स्ट फ्यू years I was like in a very lost, zoned out state, and that's when I turned to meditation. And maybe it's meditation, maybe it was maturity that I realized कि I should probably just
become self-sufficient emotionally so that again in life I do not end up being in such a state of like emotional void. Like I said, it's always a work in progress. Lekin that personal loss any which ways was never substitutable or fillable for me. But I think becoming emotionally self-sufficient has just been like the superpower which just helps me get through so many things without really, depending on anyone. So work in progress, but still great progress. Number 2 personal favorite, which is motapa. Guys, I've been obese for most of my life. Hereditary capacity mein everyone in my family has had obesity issues. I was born with congenital hypothyroid, which is a very aggressive variant of thyroid, जिसके अंदर you only keep getting fatter and fatter. मैं जब 6 साल की थी, डिटेक्ट हुआ था थायराइड, तब मेरी नानी को डॉक्टर ने बोला था कि ये इतनी मोटी हो जाएगी कि she probably might not be able to even fit into like a full size sofa. And as a 6-year-old, it just sort of crushed me. Okay, like, there's no hope for you. Over school, college, everything else, like I just kept getting insulted. I just kept getting humiliated, mocked at, run down, etc., etc. Obesity basically ate up my entire childhood and my entire teenage. I had zero self-love, zero self-confidence, and I grew up in a small town in an era when all this positivity nonsense had not hit us as yet. But because this motapa ka rock bottom kept me suffering for so long, I think today I look not bad. And I think I'm peaking with fitness. Has it been easy? No. I have to work hard, disruptively. Also because I still have thyroid, I have to work 5 times as hard as any other person to lose weight, to stay fit, to be mentally sane, to be able to push things. But because of this rock bottom, because I know how shitty it feels to be so helpless and be fat and unhealthy, I will do everything in the universe to make sure that I'm like my fittest best at all the time. और ये एक्चुअली अगर मैंने रॉक बॉटम हिट नहीं किया था, अगर मैं थोड़ा बहुत प्लेजेंटली इधर उधर चबी होती तो ये कभी नहीं होता. सो सी इमेजिन अगर मेरा मोटापे का रॉक बॉटम नहीं होता, आई वुड हैव नेवर बीन दिस स्ट्रांग मैन. लुक एट दिस. Number 3, career-wise, I am a very passionate and hardworking person. I work surgically, clinically, maddeningly hard over anything that I put my heart and head to. In like the 10 to 12 years that I was working in like a corporate setting, that included fashion magazines, that included TV, that included other things, real estate, where I always felt the amount of effort that I put, kind of results that I get, they never will get rewarded enough. Somewhere, let's say if someone's come from like an Ivy League institute, that person gets rewarded, paid, incentivized better. Let's say if someone comes from a richer background, which happened very often in the fashion magazine days. So because of their social status, they had access to people and places that maybe me as like a hardworking person did not have. So they will get incentivized to be in certain teams and paid much higher despite literally doing no work. I was denied promotions, I was denied access, I was denied whatever. I think the final nail in coffin was like the last thing that I worked on at Star. In the history of the network, I don't think anyone has been able to achieve that in the West Bengal market from that advertiser that I did. And that has become like a success story जिसके वजह से on like the clients and people have landed foreign postings. Everyone's got promoted. Everyone, including interns that worked on that project, got promoted except for the person who created the whole thing. And that frustrated me to the extent you cannot imagine. But at the end of the day, had this work-related bias and rock bottom not happened to me, I would have never ever just switched sides and decided to do something of my own. So see, this work-related struggle and rock bottom actually made me take a switch. मेरे खानदान में किसी ने business नहीं किया है, मैंने डिसाइड किया हिम्मत करके because of the rock bottom that I faced. कॉर्पोरेट सेटिंग से निकलने के बाद पिछले 4.5 साल से मैं मेरी स्टार्टअप जर्नी में लगी हुई हूँ.
मेरा पहला बिजनेस जिसके अंदर मैंने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स और अपने पेरेंट्स से पैसे बोरो करके शुरू किया, उसका लॉन्च डेट वॉज द सेम एज कोविड का लॉन्च डेट. लाइफ हैज जस्ट बीन लाइक एन एब्सोल्यूट रोलर कोस्टर आफ्टर दैट. लेकिन मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी फेच यानी मेरे पहले बिजनेस को, क्योंकि इट एक्चुअली टुक मी टू शार्क टैंक. लेकिन इमेजिन द आयरनी, जस्ट अ वीक बिफोर माई एपिसोड वॉज गोइंग टू बी टेलीवाइज्ड, I was asked to vacate my premises and क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ऑफलाइन स्टोर था जो कि ऑन एयर जाने के टाइम लाइव नहीं था, सो आई वॉज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग ऑन शार्क टैंक. सो एनीवेज उसके बाद से आई लॉन्च्ड 3 more businesses. जिसमें से एक मुझे बंद करना पड़ा, एक मुझे मॉरलिटी रीजंस की वजह से परस्यू नहीं करने का डिसीजन लेना पड़ा, और लास्ट जिसके ऊपर मैंने पिछले 1 साल से काम किया, माय बिजनेस पार्टनर चीटेड, सो आई हैड टू एग्जिट दैट बिजनेस. माय पॉइंट, एंड मे बी आई विल जस्ट कीप इट फॉर अनदर डे ऑल टुगेदर. पिछले 5 साल में मैंने जितने रॉक बॉटम डे ऑन डे हिट किए हैं, it just remains like I am sometimes amazed at how is it that I still survive each day. But yeah, having said that, we're here today. Let's say health struggles, mental, emotional, personal, blah, it'll just eat away more of the YouTube video time, so we can totally avoid it. But believe me, I had equal drama and all of that happening there also, like all of us go through. And balancing everything all at once with like my level of anxiety has always been wild. But at the end of the day, each rock bottom, चाहे वो personal हो, spiritual हो, emotional हो, physical हो, no matter what, it has only made me better. Yes, when I was going through it, it was living hell. But क्योंकि आपने rock bottom को इतना ज़्यादा visit किया है ना, I think there's like a sense, so you sort of become friends with the place. You start liking like the interiors and stuff. So you get a little better with dealing things. So what are the factors that influence rock bottom the most? Number 1, the controllability of factors. तो guys, कुछ चीजें होती है जो हमारे हाथ में होती है, कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं होती है. ये for everyone across the world more or less remains the same. लेकिन हम इन कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी रॉक बॉटम के अंदर जा सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं. नंबर 2, आप खुद को कितनी अच्छी तरीके से जानते हो. गाइस, अगर आपने सेल्फ रिफ्लेक्ट करके खुद के नेचर, पर्सनैलिटी को समझा है, जाना है और खुद के ऊपर अगर काम किया है टू इम्प्रूव, तो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कितने आएंगे, कितने जाएंगे, लेकिन आपका इंटरैक्शन आपने कंट्रोल करना सीख लिया है, एंड दैट विल एक्चुअली जस्ट गेट यू आउट ऑफ एनी बैड सिचुएशन इन द वर्ल्ड. और नंबर 3 इज प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस इन हिटिंग रॉक बॉटम. आपने अपनी लाइफ में कितने हार्डशिप्स झेले हैं, कैसे झेले हैं, और उससे खुद को आपने कैसे जाना है, बेहतर सीखा है कि कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को कैसे डील किया जाता है. दैट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इज एक्चुअली गोइंग टू जस्ट कीप यू बेटर प्रिपेयर्ड फॉर लाइक योर फ्यूचर रॉक बॉटम्स. So guys, as the PhD in rock bottom management in recovery, मैंने पिछले 30 साल के अंदर 3 मेन बकेट्स तैयार की है, जिसके अंदर मोटा मोटा ऑल सॉल्यूशंस फॉल. These are tangible, everyday, doable things जो आप नो मैटर दुनिया के किसी भी फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी या रॉक बॉटम के अंदर हो, वो आपकी जर्नी को डेफिनेटली फास्टन कर देगा और इम्प्रूव कर देगा, इफ नॉट आपको इन और आउट कर देगा. सो ये 3 बकेट्स, और उसके साथ साथ मैंने अबाउट 25 to 30 इंस्टेंट रिकवरी चीजों का लिस्ट बनाया है, जो कि आई थिंक लाइक आई ट्राइड रियली हार्ड टू फिट इट ऑल इनटू दिस वन वीडियो, लेकिन इट वुड जस्ट बिकम लाइक वेरी रश्ड थ्रू. मेरे अगले वीडियो के अंदर ये जो 3 सॉलिड बकेट्स है ऑफ डूएबल, एक्शनेबल थिंग्स दैट गिव्स यू रिजल्ट्स, एंड द 30 थिंग्स दैट व्हाइल यू आर अंडरगोइंग अ पैनिक अटैक or like absolute hell, they will make you 1% better with each action. ये दोनों चीजें मैं अगले वीडियो में आपको डेफिनेटली बताऊंगी. गाइज, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मेरी वीडियो की लेंथ में कम कर सकूँ विदाउट रियली लाइक वॉमिटिंग करके, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ कॉन्वर्सेशंस गो. आई रियली होप
that rock bottoms don't affect you as much. Please don't fear this spot. I'm gonna try coming back with my set of resolution video ASAP. Until then, please take care of yourself. I'll